started the recording. हाँ अभी तो polyplane में दिक्कत आ रही है, right? Okay. Let me just write down Yes, this ma'am. point थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, so I can then काफी टाइम demo. लगता है इसमें. हाँ. So first issue is polyplane alignment and creation, right? Yes, ma'am. सेकेंडली मैम एक और लास्ट में प्रॉब्लम है जो स्प्लिंट बनाते वक्त जो हाँ. फिक्स करने में दिक्कत आ रही है. Fixing में issue आ तो रहा है. इसमें जो एरर्स इसमें एरर्स आ रहे हैं उसको करेक्शन में बहुत टाइम लग रहा है. और कभी कभी जैसे अगर ऑटो फिक्स दे देते हैं इसके बाद फिक्स विजार्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है. एक सेकंड, आपको फिक्स विजार्ड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है. ओके, लेट्स फिगर दैट. पहले आ रहा था लेकिन फिर अगर मैं ऑटो फिक्स करता हूँ दो तीन बार दोबारा से फिर फिक्स मतलब फिक्स विजार्ड का ऑप्शन मतलब नहीं आ रहा है. ठीक है. ओके ये एक प्रॉब्लम थी. ओके. और मैं अगर एरर्स को मतलब नेग्लिजिबल मतलब उसको हटा के मतलब अनसेलेक्ट करके आप प्रोसीड करके मैंने कर लिया था मतलब. लेकिन अगर एरर्स को सॉल्व करने की जरूरत है पूरा नहीं, एरर्स या को आपको पूरी तरह से सॉल्व करने की जरूरत है. आपका फाइल प्रिंटिंग में क्रैश हो जाएगा बिकॉज प्रिंट तो आप 3D प्रिंट करोगे, राइट? क्योंकि आपको सर्जरी में वो यूज होगा, राइट? तो द फाइल इफ इज नॉट फिक्स्ड या फाइल एक तो बुलियन सबट्रैक्शन और जो आगे के स्टेप्स है उसमें दिक्कत देगा. बट प्रिंटिंग के लिए भी आपको फाइल का पूरी तरह से फिक्स होना जरूरी है, वरना फाइल बीच में जाके क्रैश हो सकती है इन केस इफ इट्स नॉट फिक्स्ड और इट हैज मल्टीपल शेल्स बेसिकली. ओके. या एनी अदर प्रॉब्लम्स? एरर्स में थोड़ा सा नहीं बस यही है. वैसे तो मैंने स्प्रिंट बना लिया था लेकिन वही मैंने अनचेक करके जो एरर्स थे उसको अनचेक करके मैंने स्प्रिंट मतलब बना लिया था. ठीक है, चलेगा. सो वी लुक इनटू दैट. लाइक रिचा, रवि, डिड यू हैव एनी issues? Did you get the chance? मैंने पॉलीप्लेन तक किया था, उसके बाद मैंडिबल में कट्स दिए थे. हेलो. हाँ बोलो ना, मैं सुन रही हूँ. हाँ मैम, मैंने पॉलीप्लेन तक किया था. उसमें मैक्सिला और मैंडिबल में कट्स दिए थे मैम. वो जब कट्स देते हैं तो मैक्सिला में क्या होता मतलब कि प्लेन जो था वो काफी अंदर जा रहा था कभी हम, या मतलब पॉलीप्लेन को एग्जैक्ट लगाने में बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही थी. बेसिकली अलाइनमेंट में प्रॉब्लम हो रही है. मतलब जो मैं ओवरऑल मैंने जो विघ्नेश से भी सुना, तुमसे भी जो ये आ रहा है फीडबैक, इट्स लाइक अलाइनमेंट ऑफ द पॉलीप्लेन इज अ बिट डिफिकल्ट. हाँ मैम. ओके, और मैम प्लस मेरे में क्या पता, मुझे समझ नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मैम जो आप विजिबिलिटी मैम उसमें ट्रांसपेरेंसी करते हैं ना, मेरा में हो ही नहीं रहा है मैम. उसका ट्रांसपेरेंसी डिक्रीज नहीं होता है. समझा. मैं मुझे क्लिक करता रहता हूँ उस पर. मुझे तुम्हारा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन बताओ ना, बिकॉज क्या होता है ना, जैसे आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे भी लैपटॉप का मतलब रिस्पांस टाइम डिपेंड करता है, सॉफ्टवेयर का रिस्पांस टाइम. तो इफ इट्स लाइक अ वेरी बेसिक 4 GB रैम का लैपटॉप रहेगा ना, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो उस हिसाब से शायद से यू हैव टू वेट. मतलब एक बार क्लिक करने के बाद एटलीस्ट 5 मिनट तक रुको. मे बी देन यू विल बी एबल टू सी द डिफरेंस, इज व्हाट आई कैन सजेस्ट यू. ओके. हाँ, बिकॉज कभी कभी ना आपकी सिस्टम मैं एक चीज पूछना था. हाँ हाँ विघ्नेश पूछना. अपलोड करने की क्या जरूरत है एक्चुअली जब डायरेक्टली हो जा रहा है. नहीं सॉरी, तो ऑक्लूजन हम तो बिठा सकते हैं. बिठाने के बाद ऑक्लूजन को करेक्शन करके मतलब जो नॉर्मल मैंडिबल और मैक्सिला में अगर कास्ट को अपलोड करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कास्ट को अपलोड करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ओके. आपका जो मैक्सिला और मैंडिबल में आप जो करेक्शन करते हैं वो आपका सिर्फ बोनी पार्ट है. आपका जो ऑक्लूजन कास्ट है उसमें आपका गम्स भी आता है, राइट? एंड ड्यूरिंग सर्जरी योर स्प्लिंट्स आर सपोज्ड टू फिट ऑन द गम्स, नॉट जस्ट ऑन द बोन, राइट? आपका पूरा गम्स तो आप कट नहीं करते और डायरेक्टली बोन पे नहीं बैठाते. यू फिट इन ऑन द टूथ विद द गम. And that's the reason the occlusion cast is a must, because in the end your fitting entity या आपका स्प्लिंट का फिटिंग एंटिटी आपका बोन नहीं है, आपका गम एंड टूथ है, इसीलिए करना जरूरी है. या बिकॉज कैसा हो जाएगा ना, अगर आप अपने बोन के हिसाब से वो बनाएंगे स्प्लिंट, तो आपका वो कभी गम पे फिट ही नहीं होगा. आपका सॉफ्ट टिश्यू कंसिडर नहीं करता है आपका बोन.
नहीं, अगर हम नेचुरल जो टीथ है राइट हम स्प्लिट बनाए। नहीं, तो अगर आप बैक साइड पे देखेंगे तो सिर्फ टूथ टूथ का वो ये नहीं आता, क्या कहते हैं, जो आपका सॉफ्ट टिश्यू है कहीं ना कहीं आपका जो स्प्लिंट का प्लेन रहेगा वो एकदम परपेंडिकुलर टू टूथ नहीं होगा, क्योंकि टूथ कैसे होता है ना, अपना अलाइनमेंट थोड़ा ऊपर नीचे होता है किसी किसी टूथ का, तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि वो गम्स को टच कर ही रहा है। इन दोज केसेस इट विल बिकम अ प्रॉब्लम। नॉट एवरीथिंग इज जस्ट ऑन द टिप ऑफ द टूथ। आप देखेंगे जो इंसाइजर है वहां पे वो स्प्लिंट ज्यादा अंदर नहीं है, सिर्फ टूथ को ले रहा रहेगा, बट वही मोलर या प्री मोलर के साइड पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि समवेयर और द अदर इट इज कमिंग इन टच विद द गम्स और स्लाइटली इन लाइन विद द गम्स। इन दोज केसेस देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम। ओके। यस। तो एनी अदर इश्यूज? नो मैम, बस यही पूछना था। ठीक है, तो मैं पहले क्या करती हूँ, याद है हमारा एक फोटो मैपिंग रह गया था, या वो रिप्ले देखना कि कैसे दिखता है आफ्टर सिमुलेशन हैज बीन परफॉर्म। ये सॉफ्ट टिश्यू, यस सॉफ्ट टिश्यू। यस एग्जैक्टली, तो वो देखते हैं एक बार। आई जस्ट स्टार्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। इज माय स्क्रीन विजिबल? हेलो। हेलो, इज द स्क्रीन विजिबल? यस मैम, दिख रहा है। हाँ ओके राइट। मैंने कहा था जैसे कि आपका प्रोजेक्ट अगर आपको सॉफ्ट टिश्यू सिमुलेशन करना है तो आपको एक दूसरा एडिट बनाना पड़ेगा, बिकॉज आपके प्रीवियस फाइल्स बहुत हैवी हो जाते हैं, एंड फॉर देम टू सिमुलेट इन द सेम फाइल ना आपका प्रोजेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम क्रैश हो जाएगा, जैसा मेरा लास्ट टाइम हुआ। So what I did is I've just created a new edit and मैंने सिर्फ जो मुझे फाइल ज्यादा जरूरी है वही यहाँ पे कॉपी करके रखा है। बाकी सब अगर मेरा सिमुलेशन ऑब्जेक्ट्स और वो सब देखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है। और मास्क में भी अगर आप देखोगे तो मेरा सिर्फ एक मैक्सिला मास्क है, एक मैंडिबल है और एक स्किन। तो स्किन के लिए एक मास्क बनाया है मैंने, राइट। एंड जो भी एक्सेस पार्ट आ रहा था साइड से जितना हो सकता है, इफ यू रिमेम्बर लास्ट टाइम वी वर मेकिंग अ मास्क और ये जो बेड का साइड रीजन है वो भी आ रहा था पूरा, तो जितना हो सकता है मैंने उसको रिमूव किया है। थिंग्स दैट आर नॉट डायरेक्टली इन कमिंग इन द एंटीरियर रीजन ऑफ द फेस, समथिंग लाइक दिस। मैं 3D व्यू में जूम कर रही हूँ। राइट, जो एकदम फेस के सामने तक नहीं आ रहा है मैंने वो पार्ट रखा है, मैंने ज्यादा वहां पे कुछ ज्यादा रिमूव नहीं किया है। तो मैंने पहले अपना स्किन के लिए एक मास्क बना दिया, जस्ट रीनेम दिस so we are not confused, skin, and then I have also calculated its 3D, जैसा आपको दिख रहा है सामने, द सेम प्रोसीजर। पहले क्रिएट मास्क के नया मास्क बनाया, उसको थ्रेशोल्ड किया, जो भी जरूरी नहीं था उसको रिमूव किया कंपोनेंट्स को, एंड देन आई हैव कैलकुलेट पार्ट से कैलकुलेट 3D किया है उसका। तो done with that, now we'll go to the skin part of it. ये स्किन का जो बना है तो प्री ऑपरेटिव भी। हाँ ये प्री ऑपरेटिव है, अभी आगे का कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। ये प्री ऑपरेटिव है, हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव तक अभी गए नहीं है। तो या here you have it, this is your pre-operative skin. तो जो आपको ट्रांसपेरेंसी में दिक्कत आ रही रहेगी ना, तो फॉर दैट व्हाट आई कैन सजेस्ट इज, यहाँ पे आपको जो 3D टूल्स होते हैं कॉर्नर में वहां पे एक ट्रांसपेरेंसी का बटन होता है, like this. So you have to click on this transparency button and then click on the options here. जो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के ऑप्शंस रहते हैं ना यहाँ पे, then only it will become transparent. If this icon is not clicked on or not ticked on, तो आपका ट्रांसपेरेंसी आप कितना भी चेंज करोगे होगा नहीं। So make sure that this button is switched on. I think ये आप एक आप में से किसी का डाउट था कि ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं हो रहा है, तो सेकंड ऑप्शन इज दिस ऑल्सो।
Yeah, that this icon has to be ticked on. ठीक है? Okay, thank you, ma'am. Yes. Okay. Coming back to the simulation part, right? तो ये सिमुलेशन के लिए आपको सिमुलेट में जाना होगा, सिमुलेट टैब सॉफ्ट टिश्यू के लिए. तो यहाँ पे राइट नाउ इट्स गिविंग मी 3 ऑप्शंस, न्यू, रिप्ले, फोटो मैपिंग. तो व्हाई? बिकॉज मैंने ऑलरेडी एक बार एक ट्रायल परफॉर्मेंस कर लिया है. आप लोग को क्या करना पड़ेगा? कमिंग बैक टू दिस, व्हाट आई हैव डन इज, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो मैंने जो 5 हम लोग ने जो एडवांसमेंट थ्रीमैटिक में किया था और जो मैंडिबल सिमुलेशन किया था थ्रीमैटिक में, वो मैंने फाइल्स वापस यहाँ पे कॉपी किया है. लेट मी डिलीट दैट पार्ट. हाँ, यहाँ पे कॉपी करके रखा है. तो मैं इसका प्रोफाइल व्यू ले रही हूँ सो दैट इट इज क्लियरली विजिबल. राइट, I'm hiding all other components so that just the skin tissue is there. So basically I'm hiding all the bony components. I don't know, some project शायद से close हुआ है. Let me just restart the project.
Till I restart that meeting, can anybody let me know कि आप cephalometric analysis basically कौन से इस पे करते हैं? Like, do you have any preset analysis, or on what basis do you do the cephalometric analysis for patients? हम कॉग्स एनालिसिस करते हैं। COGS analysis करते हो, okay. So today what I'll also do is मैं आपको वो cephalometric analysis कैसे करना है वो भी मैं आज highlight करूँगी. So pre-operative and post-operative both. Like after we finish the skin simulation, so मैंने एक tentative template Frankfurt का लिया था. So you guys can see therein. And accordingly आप एक COGS analysis perform कर सकते हैं अपने end पे, and then we can discuss.
Is the screen visible? Yes, ma'am. Yeah. So I'll just reiterate. We require only the pre-operative में हमको स्किन चाहिए, जो स्किन टिश्यू है प्री ऑपरेटिव का वो है जो दैट इज द येलो 3 मास्क, एंड पोस्ट ऑपरेटिव में वी रिक्वायर द बोनी टिश्यू जिसमें हमने चेंजेस किए हो, राइट. सो दिस इज द 5 mm एडवांसमेंट मैक्सिला एंड द मैंडिबल सिमुलेटेड. So I'll go to simulate, I'll go to new, and I'll पोस्ट ऑपरेटिव में मैं पहले तो मैक्सिला सिलेक्ट करती हूँ और फिर मैंडिबल सिमुलेटेड वाला सिलेक्ट करती हूँ. तो आई एम प्रेसिंग कंट्रोल व्हेन आई सिलेक्ट, सो आई सिलेक्ट बोथ माय एंटिटीज टुगेदर, एंड देन प्री ऑपरेटिव में मैं स्किन सिलेक्ट करूंगी. राइट. तो अगर आप देख रहे हैं पेंट लाइट आया रहेगा यहाँ पे, स्लाइट ग्रेइश कलर व्हिच इंडिकेट्स व्हाट वी हैव चोजन. दिस बॉक्स on the right hand side also indicates what are the things that you have chosen. So post operative will always be your simulated bone part and your pre operative will always be your soft tissue. यहाँ पे लिखा ही है pre operative soft tissue. फिर next click करो, right. Once you click on next, the software will then go ahead and be, as per the algorithm, give you a simulation. Now what the simulation does is, मैं यहाँ पे replay पे जा रही हूँ, so I can show you. So मैंने वही select किया था, post operative में bone and pre operative में skin. उसके बाद मुझे क्या output आया है, let's just see. So I'm selecting the simulation 2 and clicking on OK. तो आपको एक ऐसा टैब आ जाएगा when you click next also. And I'm just going to fasten this process ताकि वो visually समझे, and I'm going to click play. Can you observe here at this region when I click play? Yes. Yes. So आपके changes ऐसे दिख सकते हैं आपको. So I'll just do play again once more, so that's visible again, right? Yes. So this is how you can see the soft tissue simulation, right? And आप जो भी सिमुलेशन करेंगे यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एंड यू कैन बेस्ड ऑन योर रिकॉल कि आपका सिमुलेशन 1 2 3 जो भी रहेगा, यू कैन गो एंड सिलेक्ट. फोटो मैपिंग इज बेसिकली व्हेन यू वांट टू मैप द पेशेंट्स फोटो ऑन द स्किन. अनफॉर्चुनेटली कहाँ पर सेव हो जाएगा मैम? रिप्ले में आ जाएगा क्या? रिप्ले में जैसे मैंने क्लिक किया ना रिप्ले, मुझे 2 ऑप्शन आए थे, सिमुलेशन 1 सिमुलेशन 2, तो आपको वहां पे आते रहेंगे. Like there are times when you can just select the maxilla simulation. अभी मैंने आप देखा रहेगा आपने, तो मैंने दोनों बोन सिलेक्ट किए थे, maxilla simulation and mandible simulation together, right? You can also select alternatively, सिर्फ maxilla simulation अगर देखना है, सिर्फ mandible simulation देखना है, तो आप वैसे भी देख सकते हैं, right? Now coming to photo mapping. फोटो मैपिंग वाला जो पार्ट है, इट्स लाइक आपको उसके लिए पेशेंट फोटो लगेगा. मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी एज अ कंपनी डू नॉट रिसीव पेशेंट फोटोज बिकॉज सिंस आइडेंटिटी रिवील नहीं करना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स. तो यू कैन, like in case you do have it, you can use photo mapping option and you will have to add, मतलब आपको लोड फोटो का ऑप्शन रहेगा, तो आपको फोटो लोड करनी पड़ेगी पेशेंट की, और मैप पॉइंट्स जैसे अपन ने एंड पॉइंट रजिस्ट्रेशन किया था
वैसे आपको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एंड देन यू कैन क्लिक ओके एंड you can go ahead. But I think soft tissue simulation is good enough to understand कि क्या changes आ रहे हैं aesthetically भी, right? Now what we'll do is अभी इसके बाद cephalometric test देखना है एक बार, right? तो उसके लिए क्या करते हैं? I'll just end this meeting because only 2 minutes are left for this meeting. So and then we can again rejoin in 5 minutes on the same link. ठीक है? Because फिर वो interruption आ जाएगा. Any doubts in soft tissue simulation? No, ma'am. ठीक है, तो फिर let's then do the cephalometric analysis and then the doubt solving for splint and orthognathic, right? I'll just end the Yes. meeting and restart it.